My name is Mohammed Shakib and this is Master X. So आज हम करने जा रहे हैं camera comparison between Gcam versus stock camera on a Redmi Note 8. Without wasting any more time, so let's get started. तो ये है Redmi Note 8 अगेन Gcam है 60 FPS पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह से मिलेगी हो रही है। तो क्वालिटी डे में कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी यहाँ, तो कुछ इस तरह से आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो ये है रेयर कैमरा Redmi Note 8 का। तो आपको कुछ इस तरह से वीडियो क्वालिटी मिलेगी रेयर कैमरे की विद द Gcam। सो आप कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं Redmi Note 8 में। यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन को जज कर पाएंगे कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर चलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सो दिस इज़ द वीडियो क्वालिटी। So this is it. सो ये है Redmi Note 8 का फ्रंट कैमरा 1080 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको कुछ इस तरह से क्वालिटी मिलेगी नाइट में। अगर आप नाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप Gcam यूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से क्वालिटी मिलेगी Redmi Note 8 के फ्रंट कैमरे से।